आज हम 40 to 45 minutes का सेशन लेंगे रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी. ओके, तो वी कैन नॉट प्रोवाइड यू द होलिस्टिक एनालिसिस एसोसिएटेड विद मेंस एग्जामिनेशन, बट इंटरनल सिक्योरिटी व्हाट एवर दे आर asking and in the crux what exactly you will tell, वो सब के ऊपर हम पढ़ेंगे. Even I gave you the booklet of 32 pages. That page booklet belong to November, December, January, February. 4 months of whatever internal security news are there, whether it is Manipur, UNLF deal or ULFA peace accord, or related to the new center regarding the national terrorism and fusion center. तो वो सब हमने इसके अंदर आपको दिया है. 32 पेजेस कुछ नहीं होते, इसको अच्छे से पढ़ लेना. If they are asking something about internal security, they will not ask beyond this particular section of internal security. Is that clear? तो गौरी सही चल रहा है अभी? मॉक दिया कोई और? मॉक दिया. क्या बोलते हैं वो? सर फीडबैक तो उनका भी ऑप्टिमिस्टिक था, तो यू आर अ जेन्युइन पर्सन एंड ऑल. वी डोंट वांट टू गिव यू एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर द सेक ऑफ गिविंग एडवाइस. पता नहीं सर. ठीक है. मतलब मेरे को समझ में नहीं आया. मैं खुद अपना वीडियो देखी तो मेरे को इतने फ्लॉस पता चल रहे थे. फ्लॉस तो है काफी सारे. अब मैं क्या बोलूं बेटा, बाहर वाले लोग कुछ नहीं बोलते, उनका काम है भैया करना. जब रिजल्ट आ जाए छाप देना. तेरे को 3-4 फ्लॉस बता रखे, उसी पे काम कर. इंडिविजुअल मैं लूंगा कल परसों में कर लूंगा, ठीक है ना. आज इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ो अच्छे से. तो सबसे पहले टेररिज्म की बात करते हैं. निखिल एंड हरीश की इशारे दे रहे ना. Nikhil and yes sir, I'm here sir. Yes sir. You both are listening my words na? Yes sir. Nikhil, ready ho? Yes sir. ठीक है. So how is your preparation going on, Nikhil? Sir, it's going good sir. Actually I had come to Delhi for 4 days sir. Okay, then come and meet me tomorrow. No sir, I came back to Karnataka. Acha, you again came back to Karnataka? Yes. So how many days before you was there? Probably a week before I was there, sir. Acha. At that time, maybe Sparsha informed me. I was out. Correct. Yes. But today, if you want, then I'm in Delhi right now. You will meet me anytime. No, sir. I'm coming back in March. Probably I'll meet you then. Okay. Then March you will see what exactly is my, because right now I'm roaming pan India. You know? Yeah. And I'm just delivering the education, nothing else. Okay. Right now I'm in Delhi. If you want to meet anytime, anybody, you will come. Okay. I think Rishikesh is in Delhi, sir. I am coming in my office morning 7 o'clock because my first class is at 7 o'clock and I will stay in the night till 7 o'clock. So you will come and meet me. Okay? Chalo. So we'll start our particular lecture regarding internal security. Sparsha, fine? Good evening, sir. Yes, sir. Very good. Confidence? Yes, sir. I will only ask one thing, confidence from everyone. What people are saying about you doesn't matter. Only one thing matter at that day. Command over few topics and confidence, and you will get good amount of marks. Okay. So Yes, internal security start करते हैं. सबसे पहले terrorism, which is a very important topic. They will not give you more than 2 minutes to speak about terrorism. So just only terrorism, act of violence, political objective, terrorizing the mind of the innocent citizens, and generating the distrust between the government and the people. That people will not appreciate or support the present government. Terrorism started with human civilization itself. तो बोला जाता है ना that earth is a दुखाल्या. तो Earth is not only a दुखाल्या, Earth is equal to problems. तो अगर हम Earth बोलते हैं, Earth is equal to problems. तो there was nothing called problemless Earth. तो लोग बोलते हैं कि अब ज्यादा प्रॉब्लम आ गए, 21st century is a century of problems. नहीं, 6000 साल पहले भी प्रॉब्लम्स थी और आज भी प्रॉब्लम्स. तो terrorism started with the human evolution itself, starting from Egypt, then the overall central part of this Asia, Jerusalem, the origin of 3 religion. तो टेररिज्म के कुछ फंडामेंटल बेस बने. पहला बना रिलीजन. That 2 religion evolved with the concept that pan world same religion. That means if only one religion exists throughout the world, then there will be nothing called any type of violence, death or
competition. The first is Christianity and then Islam. And then it resulted into religious wars. Example is Salahuddin, the king of Syria, who brought the peace with the king of Jerusalem or UK. But after that, these two religions are fighting with each other, resulting into overall terrorism. Then this terrorism further intensified within the religion itself, Shia versus Sunni. Within the Christianity, Catholic versus Protestants. Then globalization, imperialism, colonization, always guided by the overall flourishment of their own religion, which resulting into homogeneous to heterogeneous culture, society, where one society or religion belong to that particular state and other outside religion or society are providing the seclusion or overall exploitation of that particular religion, resulting into again the violence, struggle, extremism, particularly terrorism. 21st century की बात करते हैं. 21st century, what exactly is the base behind the terrorism? Number one, advertisement. If anybody asking why terrorism is flourishing, funding, money, recognition, and advertisement. The WTO attack by terrorist organization Lashkar-e-Taiba, Al-Qaeda over the World Trade Center of USA is nothing but the propaganda to spread the popularity, and this popularity providing the showering of the good amount of money. And when the money will come, they will train more people, purchase more arms, ultimately resulted into flourishment of more terrorism activities. This was the first time the world understood the concept of the linkages between organized crime and terrorism. Earlier, both were different. Organized crime means like a syndicate. Those crimes which are having the organized structure, hierarchy, organizational setups, and they are mainly run through the concept of money laundering, illegal smuggling of arms and ammunition, and selling up of smuggled oil and natural gas in the international market. They are also related to human trafficking, drug trafficking, even counterfeit currency. All these things are coming under organized crime. These people are mainly concerned with syndicates, underworld, assassination of famous popularity or famous public man, also known as some celebrities. Even they are engaged in smuggling. ये इन लोगों का मेन काम होता था. Now terrorist organizations need certain type of funding. The World Trade Center attack first time providing the linkages of Dawood Ibrahim, the underworld, as well as terrorist organizations. And in return, the terrorist organization are providing the human resource, their expertise, their man, and both are working together in the contemporary world or India. We can't separate both, that is terrorism as well as organized crime. Now, this terrorism initially spreading from west to east, Jerusalem towards Pakistan, Afghanistan, Iran. And now again it is moving counter. Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba are moving towards Northern Africa, Arab Maghreb, जिसको बोला जाता है, Somalia, Nigeria, Boko Haram, Al-Shabaab. All these type of organizations are developing as an offshoot of the Al-Qaeda affiliated groups. Reason being, number one, weak political government, poverty, unemployment, and the people who are following the Islam. Mind wash is one of the major criteria, fundamentalism, Islamic versus the kattartha of these religions are making the people blind, even they are highly educated. On the name of religion, they are doing anything. So ultimately, there is a counterflow toward this, and the same Islamic terrorism is now moving towards Europe in the form of lone wolf attack. France, Germany, all these countries recently are recognizing this lone wolf attack. This is about the world scenario. World में कैसे हो रहा है? क्यों promote हुआ? Because USA never recognized. They classified between good terrorism and bad terrorism. They never gave out a single definition of terrorism which said terrorism means terrorism. उन्होंने कभी बोला ही नहीं. Even they only work for the weapon of mass destruction, deterrence, arm race, but they never recognize that there is one problem ingrained like a dimak, termites, in the world, that is economy and social system by the name of spreading up of terrorism on the name of religion.
The classical recent example is religious war, also known as Intifada, Palestine versus Israel, where all the Islamic countries blindly supported the Palestine issue without knowing that this is not the war between Israel and Palestine. It is a war between Israel, one of the country recognized by United Nations, and one of the terrorist organization within the Palestine by the name of Hamas. क्या मेरी बातें समझते जा रहे हो आप सब लोग? अब इंडिया की बातें करते हैं. What exactly about India? The India base of terrorism started with partition itself. India is one of the major countries in the world where partition was on the base of religion, guided by the historical policy of Britishers divide and rule. And after the partition, chalo partition ho to koi baat nahi, after the partition, the countries were not formed on the line of religion. Pakistan discarded each and every Hindu from their country, except few which are remaining here there. But India stopped their Muslims within the particular country, which now making India one of the largest country with the Islamic population, which resulted into the issue of majority versus minority, religious affiliation, Pakistan affiliation, which become one of the major source behind the terrorism in our country. Apart from that, terrorism become prominent because of number one, Kashmir issue. The separatist people of Kashmir who always want Kashmir as a separate country or the part of Pakistan are promoting and facilitating terrorism in our country. Number two, porous geographical borders. 7,500 kilometers, the overall coastline are highly porous. There are more than 200 minor ports where Coast Guard, even state police are not providing the vigilance. Still, the existing issue of Sir Creek, the desert and the mountainous borders, the weather system during the time of snow and melting above snow, it is very hard to safeguard our borders. Physical fencing is not up to the mark. Even with a country like Nepal, we are not having the formal visa regime. Anybody can cross the border without any type of vigilance because Sasastra Seema Bal are not that much well equipped that they can restrict. If all the exits or the entry are seizing, Nepal entry is always be available for the people who are having the border with Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, and marking this border in the Tarai region is very, very hard. Anybody can cut it and easily enter into our country. So many sleeper cells are working in our country. Within our country, corruption, leaking of the information, counterfeit currency, which is major source, human trafficking, drug trafficking, arms trafficking, all are becoming the source of terrorism, which recorded good amount of terrorist attacks in our country. In counter, India's strategies in the last 8 years become very prominent. That's why in the last 3 years, terrorism attacks are moving towards only 1 or 2 attacks, and that is also countered by our forces in a good manner. Strategy of the country to control the terrorism are related to number one, जो सबसे important strategy भारत की start हुई, that is hot pursuit or surgical strikes. That we are saying we are not impinging or infringing the sovereignty of any country, but if somebody hurts us, we will also hurt that particular organization which are supported by Pakistan, because ultimately Pakistan never accepted that terrorism activities are going in their own country. The hot pursuit surgical strike are converting India from soft power diplomacy to hard power diplomacy. ये आप एक point यहाँ पर याद रखेंगे. Apart from that, bold quit, the new type of infrared technology enabled fencing, surveillance system, drone surveillance and hot balloon surveillance system, modernization of border security forces, recent amendment regarding the jurisdiction of BSF, which makes the BSF moving inward towards Pakistan, even Rajasthan, to track the drone and drone supply of arms and ammunitions. All these are some of the new strategies to tackle the terrorism. Apart from that, UAPA, Unlawful Activities and Prevention Act, people are criticizing, but somehow it is controlling the terrorism by recognizing individual person as a terrorist organization. On the other side, money laundering, we are controlling it in a very strict manner with the help of Enforcement Directorate. Enforcement Directorate is somehow controlling all type of money laundering activities which become ultimately source of round tripping vis-a-vis financing of terrorism. And the new government or this present government made the terrorism as an issue on the international platforms.
everywhere our country make this terrorism as a issue, whether it is G20 platform, whether it's a BRICS, RIC, SCO, anywhere. And India demand only one thing, that is a fundamental formal definition of terrorism without recognizing the bad terrorism or a good terrorism. For India, it is now not country-specific problem, it is a global problem now, and world is accepting this. That yes, terrorism are becoming the global problem. Now it is not associated with only few countries like India or other people, or Philippines or Indonesia. It is a global menace which are hurting the overall political systems, taking the innocent lives, turbulence the economic system. Only the propaganda and the manifestation of few terrorist organizations who want to just rule it. This thing particularly intensified after ISIS, Islamic State of Syria and the Arab countries. And now the world countries are with India and they are saying, okay, do something. SCO already have this mechanism by the name of REDS, Regional Anti-Terrorism Strategy. Tashkent, Uzbekistan is a headquarter. India recently organizing it, and now they are working regarding the multilateral platforms. Even India is visiting the Arab countries, particularly UAE, Saudi Arabia, and signing the individual pact regarding the sharing of information associated with the extremism, insurgency, as well as money laundering activities in their country. जय। तो ये आपका एक पूरा पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेगमेंट था एसोसिएटेड विद टेररिज्म। अब कुछ भी आएगा आपके पास अच्छा खासा पॉइंट होगा बोलने के लिए। नाउ वी आर ओपन अवर हैंडआउट जो आज हमने आपको दिया है रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नेशनल टेररिज्म डाटा फ्यूजन एंड एनालिटिक्स एनालिसिस सेंटर। तो इस हैंडआउट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबके ऊपर आपको एक समरी दिया जाएगा। ये एनआईए का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, तो ऑलवेज रिमेंबर एनआईए वाज फॉर्मुलेटेड आफ्टर मुंबई टेररिस्ट अटैक। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज द कोर एजेंसी टू कंट्रोल द टेररिज्म इन अवर कंट्री। द वेरियस हेड ऑफ एनआईए इज गाइडेड बाय आईपीएस ऑफिसर ओनली। आईपीएस ऑफिसर्स को इसके अंदर हेड बनाया जाता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, बिकॉज दे आर हैविंग द एक्सपीरियंस थ्रू द एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफ एवरी स्टेट। तो NIA has developed the National Terrorism Data Fusion and Analytics Center NTDFAC। ये न्यूज अभी फरवरी की है, अभी 2-3 दिन पुरानी है। Which makes the government collect and compile information on terrorists and their associated from various sources. The NIA has for the first time collect details of all terrorists, including those from Indian Mujahideen and Lashkar-e-Taiba, as well as Khalistan militant group, because it is now the emerging problem. Only because other world countries, particularly Canada, are making it fuse. Pakistan कुछ नहीं कर पा रहे, तो they are indirectly somehow provoking the Khalistan issue. And Khalistan is an age-old issue. हर जगह होता है because some people always want the political advantages. That's why, with the help of foreign funding, they are fueling this new terrorist outfit in our country by the name of Khalistanis, and pressure over Indian government to form the Khalistan as a separatist, that is a state. The National Terrorism Data Fusion and Analytical Center has been modeled along the lines of Global Terrorism Database. तो वर्ल्ड के अंदर हमारा क्या है, GTD in the USA. So Global Terrorism Database is one of the major database within the USA. On the line of this, we are trying to form our NTDFAC. The Global Terrorism Database is managed by National Consortium for Study of Terrorism and Response to Terrorism START, based on the University of Maryland and United States. The Global Terrorism Database is a publicly accessible database that collects and analyzes data on terrorist incidents globally. It provides detailed information on various aspects of each incident, including the date, location, weapon use, tactics employed, target, and number of casualties. So in India, NTDFAC, it will serve as the centralized database and analytical center for information related to terrorism and terrorist operation. In 2023, Ministry of Home Affairs has asked the state police forces and anti-terror agency to adopt an approach. Comprehensive database बनेगा, automatic fingerprint identification system बनेगा, incorporate the national automated fingerprint identification system, which hold over 92 lakh fingerprints record. तो पहली बार भारत के अंदर एक digital fingerprint record बनेगा, which hold more than 92 lakh fingerprints. Okay, face recognition system already इंडिया में आ चुका है. Equipped with the face recognition system, CCTV footage के थ्रू पहचाना जा सकता है, and support of the state police. तो इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए, डाटाबेस बनाया जाएगा, फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट फॉर द पुलिस फोर्सेस. नाउ नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम.
National Automated Fingerprint Identification System is conceptualized and managed by National Crime Record Bureau. It is a country-wide searchable database of crime and crime-related fingerprints. The web-based application functions as a central information repository by consolidated fingerprint data from all the states and UT. Web-based application, the system operates as a web-based application allowing law enforcement agency to access and manage fingerprint data in the real-time 24/7 basis. यूनिक आइडेंटिफायर्स होगा इसमें, फिंगरप्रिंट असाइन अ यूनिक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। तो जैसे हमारा आधार का यूआईडीआई होता है, ऐसे इसका भी होगा 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। देन डिफरेंट एफआईआर उसी समय पर ले लिया जाएगा। देन इंटीग्रेशन विद सीसीटीएनएस, देयर इज अ सेंट्रल क्राइम, देयर इज अ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम डेटाबेस एट द बैक एंड, रियल टाइम डाटा अपलोड एंड रिट्रीवल, रिप्लेसमेंट फॉर प्रीवियस सिस्टम्स। फिर एनआईए के बारे में पढ़ते हैं। एनआईए इज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो लाइक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी है, एनआईए क्या है हमारा? सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट ऑल द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्मगलिंग ऑफ आर्म ड्रग्स, फेक करेंसीज, द ऑफेंसेस अंडर द स्टैट्यूटरी लॉ एनेक्टेड टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन एंड रिजल्ट resolutions of the United Nations, its agencies and other international organizations सबके साथ मिला के चले। 2008 में आया था through the statutory or statute by the name of National Investigation Agency. The agency is empowered to deal with the investigation of terror-related crimes across states without special permission from the states. Under written, there is a proclamation from the Ministry of Home Affairs, headquartered New Delhi। 2611 के बाद फॉर्म हुआ था। जुडिक्शन की बात करते हैं, यही पूछा जाएगा। The law under which the agency operated extended to the whole India and also applies to Indian citizen outside country। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको बोल के आना है। तो सिटीजन चाहे कहीं पर हो इंडिया में, चाहे उससे बाहर, उन पर अप्लाई करेगा। Persons in the service of the government wherever they are posted, person on ships and aircraft registered in India, persons who commit a scheduled offense, उन सबके ऊपर भी एनआईए इंक्वायरी कर सकता है। शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑफेंस एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंदर, ये पता होना चाहिए, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सेपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, सार्क कन्वेंशन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इन सब पर एनआईए अपना काम कर सकता है। तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज व्हाट एग्जैक्टली आर द शेड्यूल्ड ऑफेंस। ये बहुत जरूरी है और यहीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा। व्हाट एग्जैक्टली आर द शेड्यूल्ड ऑफेंस? इज दैट क्लियर? देन नेशनल ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है? तो नेशनल ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कंसर्न आए बहुत सारे, ऑब्वियसली बात है। इट इज अ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स, फेस भी होता है। सीसीटीवी कैमरा से ये लोग लेंगे एल्गोरिदम्स के थ्रू एंड देन दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज इवन यू आर इन द कार। आजकल स्पीड मीटर पर कैमरा लगा होता है, उससे भी आपका फेस लगातार रिकॉर्ड किया जाता है एंड दैट ऑल द डाटा कैन बी यूटिलाइज्ड रिगार्डिंग द फेशियल रिकॉग्निशन। देन AFRS यूज्ड इन इंडिया अर्लियर, तेलंगाना में 2018 में यूज हुआ पहली बार। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन डिजी यात्रा करके यूज हो रहा है। एंड NCRB CCTNS वाज ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ओनली, जिसमें जो क्राइम्स होते हैं और FIR जब दर्ज होती है तो तुरंत आपका फोटो खींचा जाता है एंड देन दे कैन इंक्लूड इट। How is it useful? To identify criminals, missing people, and unidentified dead bodies as used in CCTNS. It will prevent the use of fake citizen ID by fraudster, infiltration of terrorist, illegal immigration. ये point important है. It is easier and automatic and does not need huge manpower. Then what are the implication of using NFRS? Mass surveillance हो जाएगा. Same like the overall China accuracy, right to privacy का issue रहेगा. Storage of data, impact on civil liberties, ये सब इसके साथ issues. नाउ CCTNS, ये सब टेररिज्म के साथ ही चल रहे हैं, एक साथ के बाद एक के बाद एक के बाद। CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंडिया police is a state subject. Every police is having their own database. That's why it is very hard to track the criminal if they cross the state boundary. To solve this problem, government came out with CCTNS as a common integrated police application throughout the country. मिशन मोड प्रोजेक्ट में लॉन्च हुआ था एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। तो ये आपको इंटरव्यू के लिए याद रखना है कि इट वाज लॉन्च्ड एज अ मेजर पार्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 14,000 police stations throughout the country has been proposed to be automated besides 6,000 higher offices in the police hierarchy और अप्रूव्ड हो गया था 2009 में। ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव हर चीज क्या रखना है इंटरव्यू में, वो मेनली आपसे ऑब्जेक्टिव ही पूछते हैं या थोड़ा एनालिसिस पूछते हैं और यही आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। दैट इज मोर देन
sufficient. It make the police functioning citizen friendly and more transparent by automating the functioning of police station. Improve citizen centric services with the use of information communication technology. And it provide the investigating officer of the civil police with tools, technology and information. Recent initiative MOU साइन किया गया between the National Intelligence Grid and NCRB regarding the CCTNS database. NCRB हमारे देश में डाटा निकालता है regarding suicide, women crime, children's crime. उन सबको अब कहां से डाटा मिलेगा? CCTNS से. NCRB के बारे में पढ़ लेते हैं. NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, सेटअप इन 1986, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. To function as a repository of information on crime and criminals so as to assist the investigators in linking crime to the perpetrators. It was set up based on the recommendation of National Police Commission and the Ministry of Home Affairs Task Force. NCRB brings out the annual comprehensive statistics of crime across the country. Crime in India report being published in 1953. अब आएगा drugs. NDPS Amendment Bill 2021. This is also the part of the scheduled crime under NIA. शाहरुख खान के लड़के के बाद से ये आ गया था और ये कभी भी पूछा जा सकता है. इंडिया में 3 ग्राम भी रखना क्राइम होता है. तो पहला एक्ट आया था 1985 में, मेनली एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी. The act regulates certain operations such as manufacturing. ये वर्ड बस याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कंजम्पशन, तीनों ही क्राइम है. तो ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना और उसका कंजम्पशन करना, ऑल आर कमिंग अंडर द ओवरऑल NDPS Act. That is the Drug and Psychotropic Substances and Prevention Act. Under the Act, financing certain illicit activities such as cultivating cannabis, manufacturing narcotic drugs, or harboring person engaging in them is an offense. Person found guilty of this offense will be punished with rigorous imprisonment of at least 10 years, extendable up to 20 years, and a fine of at least 1 lakh. तो आपको पनिशमेंट याद रखना, 10 साल का 20 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, एक तरह से लाइफ ही बन जाती है, और 1 लाख रुपए का फाइन लगता है. इवन दे आर हैविंग द प्रोविजन लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, दैट इज फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी. तो कोई भी प्रॉपर्टी ड्रग्स की सेल से खरीदी गई है उसको फॉर फीचर किया जा सकता है, ड्राइव फ्रॉम और यूज्ड इन इलिसिट ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. इट आल्सो प्रोवाइड फॉर डेथ पेनल्टी इन सम केसेस. तो रिपीटेड ऑफेंडर्स को डेथ पेनल्टी भी दी जाएगी. सबसे हार्श पनिशमेंट साउथ ईस्ट एशिया में है. जैसे नार्कोटिक्स का कोई केस होता है तुरंत डेथ पेनल्टी वहां पर दी जाती है, वेदर इट इज श्रीलंका और वेदर इट इज इंडोनेशिया और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ब्यूरो बनाया जाएगा जिसका नाम है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. ऑल दिस थिंग्स वर द पार्ट ऑफ 1985 एक्ट. मैं फिर से बोल दूं ये सारी चीजें किसका पार्ट है? 1985 Act. Then government came out with the amendment in this NDPS Act in there is a 2014 onwards. The bill would replace an ordinance promulgated earlier this year 2021 to correct a drafting error in a 2014 amendment to the Act. Before the 2014 amendment, clause 8A of the section 2 contained subclauses 2-5 which define the term illicit traffic. In 2014, the Act was amended and the clause number of definition for such illicit activities was changed. However, the section 27 subclause A on penalty for financing these illicit activities was not amended and continued to refer to as early clause number of the definition. The ordinance amended the section on penalty to change the reference to the new clause number. The recent judgment, Tripura High Court has held that until the appropriate legislative change occurs by the amending section 27A, subclause 1 of section 2 shall suffer, that is the effect of deletion. अभी section 27A है क्या? The provision reads that whoever indulges in financing directly or indirectly any of the activities specified in subclause 1 to 5 of clause 8A of section 2 or harbors any person engaging in any of the aforementioned activities, he shall be punishable with rigorous imprisonment. कहने का सिंपल बात है, कोई भी फाइनेंसिंग में पाया गया, अगर उसने फाइनेंस भी किया है तो वो भी पकड़ा जाएगा और उसको 10 साल की सजा हो सकती है, एक्सटेंडेड टू 20 इयर्स. और इसमें जो फाइन होगा 1 लाख रुपीस, बट ये एक्सटेंड कर देगा 2 लाख रुपीस तक. Provided that court may, for reason to be recorded in the judgment, impose a fine exceeding 2 lakh rupees. Reason of section 27A get inoperable.
the text of provision says that offenses mentioned under Section 2 punishable through Section 27A. Section 2, which is supposed to be a catalogue of offenses, does not exist after the 2014 amendment. यही सबसे बड़ी बात होगी. ऑब्जेक्टिव क्या था बिल का? ड्रग अब्यूज वाले लोगों को हेल्प करना, फ्रॉड ऑफ एडिक्शन एंड decriminalize possession of limited quantity of drugs for personal use while regulating certain operations such as manufacturing, transport, consumption of narcotic drug and psychotropic substances. बाकी कंसर्न वसन का हमें मतलब नहीं. इंडिया में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है नार्कोटिक्स को? इंडिया में सबसे ज्यादा नार्कोटिक्स कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मंदसौर, रतलाम बेल्ट. India is the largest producer of opium in that area and Rajasthan. But both the areas right now producing the opium for pharmaceutical industry for additive medicines. These medicines are to heal the pain of the cancer or other patients, जिसको हम illegally allow करते हैं. But somehow it is also going into the open market, which is highlighted in one of the series of Sushmita Sen, है ना, जो राजस्थान में दिखाएगा, because drugs are mainly cultivated in the semi-arid and arid locations. ठीक है, कि किस तरीके से on the name of medicine it has been smuggled in the international market and providing the base associated with the overall funding of terrorism and terrorist organizations. Now, what are the other, that is the initiative here, if you look upon, narco coordination centers, financial assistance to the state for narcotics control, seizure of information management system, National Drug Abuse Survey, Project Sunrise within the Northeast India, NDPS Act, and Nasha Mukt Bharat campaign or Drug Free India campaign. So these all are the things which you people can remember. Now, Central Security Forces. तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से जान लेते हैं. What exactly is the Central Security Forces and what exactly are the aims of the Central Security Forces? Central Security Forces आजादी से पहले थी. They were known as Imperial Security Forces. तो दो फोर्सेज जो आजादी से पहले थी, one is Assam Rifles and one is Imperial Forces, which later known as CRPF. इनका मेन काम था to maintain the overall internal security and to control the tribal conflicts in the northeastern states. After independence, police becomes the state subject, but there are certain type of issues which cannot be controlled by the state police. That's why Central want their own police by the name of CAPF, Central Armed Police Forces. So there are two type of forces. One is paramilitary forces. उसमें बस एक ही आती है Assam Rifles, and one is Central Armed Police Forces. Central Armed Police Forces including Sashastra Seema Bal bordering Bhutan and Nepal, BSF bordering the Pakistan and Bangladesh border, ITBP bordering the overall China, Assam Rifle bordering the Myanmar, CISF safeguarding our critical infrastructure like nuclear power plants, airports, and etc. Then Home Guards, as well as that is a Home Guard Civil Rights Group and the RFA, that is the Rapid Action Force to control the communal rights. All these are the Central Armed Police Forces except Assam Rifle. These forces are headed by IPS officers, but their junior ranks are coming from CAPF examination assistant commandant. Issues arises from here. Their workload is high. They are more prone to suicides. They are not getting the same pension like the army. Even their salary pattern is not same like the army. Their training is also not that much advanced like the army. And they are as a first wall of defense regarding the insurgency, extremism, and terrorism. All these things resulted into the demand of the reforms regarding pension, facility of army canteen like facility to Central Armed Police Forces canteen, widow pensions and the widow reforms like the army, even amalgamation of all the forces, particularly the Assam Rifles. Debate क्या है? Debate बहुत सारी. Army rules and regulations are different from police, and these forces are headed by IPS officers. Therefore, there is a vast difference between the work culture. Number two, there is a threat. If the strategic information are provided to these forces and their overall commanders, the chances of corruption and leakages are becoming very high. And government do not have that much amount of expenditure after the Agniveer scheme. It is proved that government do not want employees on the permanent basis of deployment. इसी बीच में नया इशू आता है रिगार्डिंग द जुरिडिक्शन ऑफ बीएसएफ बिकॉज ऑफ ड्रोन्स एंड ड्रोन सप्लाई. उसी के ऊपर हमारी न्यूज है जो हम पढ़ने जा रहे हैं.
The Supreme Court is set to hear the dispute over the expansion of the BSF jurisdiction in Punjab. यह आया था 2021. So in 2021, Ministry of Home Affairs issued the notification expanding the jurisdiction of BSF in 3 areas: Punjab, West Bengal, Assam. असम को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट दो जगह नहीं है. This was challenged by Punjab government because it is a federal issue. क्या बन गया ये? Federal issue. Punjab says this is a state subject. We are responsible regarding the security of Punjab, but by providing more power to the BSF, you are indirectly implemented the AFSPA within the Punjab Armed Force Special Power Act, which is directly hurting the federal sentiments, even cooperative federalism. 2021 में आप याद रखिए. The BSF was raised in 1965 after the India-Pakistan war, obviously. 2.65 lakh forces deployed along the Pakistan-Bangladesh border. It is deployed on the Indo-Pakistan international border, Indo-Bangladesh international border, line of control, even deployed in army with anti-Naxal operation. BSF के दो तरह के फंक्शन होते हैं जो आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा, पीस टाइम एंड वॉर टाइम. पीस टाइम में दे आर एक्टिंग एज द फर्स्ट वॉल ऑफ ओवरऑल सर्विलेंस, और वॉर टाइम में दे आर गिविंग ऑल द चांसेस टू द आर्मी. दे आर एक्टिंग एज द आईज एंड ईयर ऑफ द आर्मी. They are take caring of the war of prison, even providing the relief to the people who are residing in the border areas. These are the two type of work of the BSF: wartime and the peacetime. Then BSF has been defending Sar Creek, Sundarban Delta, Bay of Bengal, even participating in the United Nations peacekeeping forces सब जगह. अब BSF का jurisdiction क्या है? The BSF is meant to secure India's border with its neighboring nations and is empowered to arrest, search and seize under a number of laws such as CRPC. ये सबसे important point है. तो BSF search और seize कर सकती है under the CRPC, Passport Act, NDPS Act. तो ये तीनों एक्ट के थ्रू काम कर सकती है. Section 139 of the BSF Act allow the central government through an order to designate an area within the local limits of such area adjoining the border of India, where members of BSF can exercise power to prevent offense under the Act. Then extension of BSF jurisdiction. Prior to the notification issued in October 2021, the BSF could exercise its power within 15 km of the border of Punjab, West Bengal, but now it has been extended within 50 km. तो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया. This is a major issue. याद रखोगे. The notification states that within the larger 50 km jurisdiction, the BSF can only exercise power under CRPC, Passport and Passport Act. ये तीन एक्ट चलेंगे जिसमें वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे. For other central legislation, the limit is 15 km only. तो बाकी सबके लिए आपकी जो लिमिट है that is only the 15 km. In the state of Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Jammu Kashmir, Ladakh, it extend to the entire area of the state. लेकिन बाकी इन सब स्टेट में पूरा जुरिडिक्शन CAPF का ही आता है, particularly Assam Rifles. Then reason for execution of jurisdiction: increased use of drones regarding the overall arms supply and smuggling of drugs. Cattle smuggling हो रही है. Smuggling often seek refuge outside the BFS restrictions. और ये cattle smuggling के through they are also supplying certain type of things. And then uniform jurisdiction. Extension of BSF jurisdiction in Punjab, West Bengal, Assam establish uniformity in the jurisdiction of BSF across states in India, जो बाकी स्टेट में 50 किलोमीटर और एंटायर स्टेट्स है. Additionally, the notification reduced the jurisdiction in Gujarat from 80 km to 50 km. गुजरात में कम कर दिया गया BSF का jurisdiction from 80 km to 50 km. फिर what are the issue? वही concern over state powers, which is guided by Article 246, cooperative federalism, geographical differences, ये सब है. Then what need to be done for border management without compromising jurisdiction of the state? Collaborative approach होना चाहिए, सेंटर स्टेट मिलके काम करें through joint task force. ये इंटरव्यू पूछा जाएगा. Involvement of the state police होना चाहिए with the navy and the coast guard. Technology integration होना चाहिए. Clear framework होना चाहिए. Regular consultation with the state होना चाहिए. फिर पंजाब की कौन कौन सी स्टेट है जो इसके बाद इफेक्ट होंगी? पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, फैजलका, मोंगा, फरीदकोट, मुक्तसर. All these states or districts are coming under the jurisdiction of BSF. Now, constitutional viewpoint on deployment of armed forces in the state, ये भी पूछा जा सकता है. Article 355 याद रखेंगे. Article 355 of the Indian Constitution provided the authority to deploy forces to safeguard the state from external aggression and internal disturbance. तो आप हमेशा याद रखेंगे Article 355 सेंट्रल पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. They are providing the power to the central government to deploy the CAPF.
तो 355 356 आपको बताइए, 355 हो गया आर्म फोर्सेस डिप्लॉयमेंट का एक्सटर्नल एग्रेशन पर, 356 प्रेसिडेंट रूल। तो सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप यहां मैंने बता दी, पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 टू 255 रिवीजन के तौर पर, देन एडमिनिस्ट्रेटिव 356 टू 263 एंड देन 256 टू 291 फाइनेंशियल रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है अंडर आर्टिकल 131 व्हेन टू और मोर स्टेट्स आर फाइलिंग द कंप्लेंट अगेंस्ट द सेंटर, आर्टिकल नंबर 131, याद रखोगे अच्छे से। फिर यहां पर हमने पूरा मणिपुर का दिया है। मणिपुर इज वन ऑफ द मेजर स्टेट। और एक बार मैप खोल लो, अगर आप लोगों के पास एटलसेस रखे हो, प्लीज ओपन द मैप। कोई भी एटलस खोल लो, प्लीज ओपन एनी एटलस प्लीज। मणिपुर का लोकेशन देखो, नॉर्थ में नागालैंड होगा, मिजोरम होगा, म्यांमार बॉर्डर होगा एंड बॉर्डर विद बांग्लादेश भी होगा। यस और नो? मणिपुर का बॉर्डर बांग्लादेश से कभी नहीं लगता। त्रिपुरा और मिजोरम ओनली टू स्टेट्स आर हैविंग द बॉर्डर विद बांग्लादेश। मणिपुर का बॉर्डर असम से लगता है। यस। अब आप यहीं पर एक लोकेशन है विच इज अ कंट्रोवर्शियल लोकेशन रिगार्डिंग म्यांमार एंड मणिपुर, मोरे। It is a major gad of insurgency, More. Good amount of Assam rifles. It is not mentioned in the atlas. Write down. अगर नहीं पता तो More. And only from this location insurgency took place. Even NSC and IM, which is one of the major rebellious group within the Nagaland, is now operated in Manipur by the name of Khaplang, Naga Socialistic Council of Khaplang. Then, if you see the four important districts in Manipur, which is known as Kuki Hilly region of Manipur, Tamenglong, Ukhrul, Chandel, ये लोकेशन देखो 4, सेनापति। These regions are always under the dispute because of Kuki and Naga, which are fighting the bloodiest war in the last few decades. And then plain areas which are dominated by the Methi people. These Methi people are the more progressive people and holding 70% of the resources of Manipur. And in the recent time, they demanded the scheduled tribe status, which is not accepted by the Kuki and the Hilly tribal people. And this Kuki and the Hilly tribal people is comprising of 15 Naga tribes, including Chin people, Kuki people, Mizo people, Jomi people, थाउडी पीपल, पाइटी पीपल, जाऊ पीपल, ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। बस आपको रखना 15 सब ट्राइब्स ऑफ द नागास, सुमी नागा है ना, जोमी नागास, एंड दे आर सेइंग वी आर ऑलरेडी लैक विद रिसोर्सेज, वी डू नॉट हैव द एम्प्लॉयमेंट। इफ यू आर प्रोवाइडिंग द ओवरऑल शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट द हिली ट्राइबल पीपल, रिजल्टिंग इनटू वायलेंस। तो मणिपुर 2 इश्यूज की वजह से वायलेंस में था। नंबर 1, इंसर्जेंसी mainly from the side of the Myanmar, More, and number 2, Methi versus tribal people, mainly Kuki and the Naga tribal people of the Kuki tribal region of Ukhrul, Senapati, Tamenglong, Chandel. Government tried, but somehow the issue was not resolved. Ultimately, the state government is saying, okay, we are not providing, but we will think. And the major issue between Kuki versus Methi divide is still existing in Manipur. तो उसी के ऊपर पूरा है, आपको दिया गया है 16 डिस्ट्रिक्ट्स है मणिपुर में, एंड द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वैली एंड द हिल। टुडे वैली इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट इंफाल, इंफाल वेस्ट, थौबाला, बिष्णुपुर एंड काकचिंग वर द पार्ट ऑफ द खांगली पीक रूल्ड बाय द निकथौज डायनेस्टी। मणिपुर वैली इज एनरिच्ड बाय स्कर्ट्स ऑफ लो हिल्स। 15 नागा ट्राइब है यहाँ पर, चिन, कुकी, मिजो, जोमी, थौडू, हमार, पाइटी, वाईपी एंड जौ पीपल। Then Khangil Pak Kingdom, then a British protectorate was repeatedly raided by Naga tribes who came down from the northern hills. The British political agent in the Manipur brought Kuki Zomi from the Kuki Chin hills of Burma to protect the valley from plunder by acting as a buffer between Mathis and Nagas. ये इसका मेन पार्ट हो गया। Mathi Naga divide, Kuki divide. The hill community है 2 जो मैंने बताया आपको, Naga and Kuki, and the Mathis have had ethnic tensions since the kingdom era. और उस समय से चाहते थे Kuki land, a state within India. और मैथिस कौन है? हिंदू है। क्लैश विद पंगल्स, मुस्लिम्स आर आल्सो देयर, वाज हॉरिफाइड वायलेंस बिटवीन द ट्राइबल नागास एंड द कुकीज। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूड़ा चंद्रपुर, कुकी जोमी डोमिनेटेड चंद्रपुर, एंड अ म्यांमार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैज मोस्टली क्रिश्चियन पॉपुलेशन,
It is the country's poorest district as per the Panchayati Raj Ministry and is remained abjectly poor. In 2015, as the Mathis of the Valley protested, demanded ILP, inner line permit. ये तीसरा इशू है मणिपुर में. In Imphal city, equally intense protests were seen in Churachandpur because they are having the good amount of, that is a Christian population. तो वे सारा दे रखा है जो आप पढ़ सकते हो. मैथी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए था. द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट, ये पूछ सकता है यूपीएससी आपसे इंटरव्यू के अंदर. स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट रिकमेंडेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ ट्राइब इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब. तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आता है? स्टेट गवर्नमेंट का. आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री रिव्यूज एंड सेंड देम टू द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया. तो ये लिस्ट भेजी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम में भेजेंगे. After approval, it is sent to National Commission for Scheduled Tribe and then sent to Cabinet for final decision. ये आपको प्रोसीजर अच्छे से याद रखना है. Once the Cabinet finalize it, then it introduce a bill in the Parliament to amend the Scheduled Caste Order and Constitution Scheduled Tribe Order under Article 341 and 342. 341 is for SC, 342 is for ST Scheduled Tribe. फिर पूरा दे रखा है ड्रग प्रॉब्लम वगैरह, ये सब इनकी रिसेंट प्रॉब्लम है, तो वो आप पढ़ सकते हो. फिर हिस्ट्री ऑफ UNLFP पीस अकॉर्ड. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मणिपुर इशू, which is related to UNLFP, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट. एक है उल्फा, वो असम में है. UNLF कहां पर है आपका? मणिपुर में. UNLF. Manipur has been the cross current of India oldest insurgent groups, mainly the Naga movement on the one side, who talks about Greater Nagaland. और वो पूरा कुकी एरिया किसमें लेना चाहते हैं? नागालैंड में. एंड सेकंड इज कुकी, इंडिपेंडेंट कुकी होमलैंड और कुकी लैंड के नाम से. और लास्ट इज मैथी. फिर ये दे रखा है पूरा एक प्रोफाइल. मैथी डोमिनेटेड, कुकी जोमी डोमिनेटेड, नागा डोमिनेटेड, कंडेल, तमिंगलोंग एंड जरिम्बाम, जहां से रेलवे लाइन चली है जरिम्बाम टू असम की तरफ, है ना. देन UNLF, it is a Manipur oldest militant group dominated by the Mathi community. तो ये कुकी हेडिंग करते हैं, कौन करते हैं? मैथी. एंड वन ऑफ द 7 मैथी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बनी थी. फाउंडर थे अरम्बाम सामरिंद्रा. क्या नाम था? अरम्बाम सामरिंद्रा. ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया से अलग जाना और रिक्लेमिंग करना काबाओ वैली इन मणिपुर, म्यांमार, और उसको मिला के अपना खुद का एक लैंड बनाना, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया. 2005 में पहली बार पीस टॉक स्टार्ट हुई, जहां पर 4 पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ. प्लेबिसाइड कराया जाएगा यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो कभी हो नहीं सकता. यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस आके रहेंगे यहाँ पर. आर्म सरेंडर होगा, पॉलिटिकल अथॉरिटी होगा. तो दीज आर द पार्ट. लेकिन ये सब कहने वाली बात है. देन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं. डिफरेंस देख लो बस, दोनों में अंतर क्या होता है. ऑर्गेनाइज क्राइम सीक फाइनेंशियल और मेटेरियल बेनिफिट. टेररिज्म एम टू intimidate a population or government for political or social objectives. Nature of activities typically involved illegal business, fraud, drug trafficking, involved in the violence, hostages, bombing, etc. It required organized group, not committed by a single person. It can commit by a single person also, or organized group. May form alliance with terrorist group for mutual benefit. It form alliance or connections can exist but with different motives. They can adopt terrorist tactics for criminal objectives, may engage in criminal activities to fund or support terrorist operations. कहाँ लिंक देखने को मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन एंड देयर ओवरऑल फंडिंग विद द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी दिखता है उल्फा, है ना, एंड अदर टाइप ऑफ, एंड नक्सलाइज में भी दिखता है. लीगल पोजीशन क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज ऑलवेज एक्जिस्टिंग इन इंडिया इन सम फॉर्म और अनदर. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया था 1980 में, NDPS एक्ट आया था 1985 में. देन गुजरात का अपना खुद का लेजिस्लेशन है, ये इंटरव्यू पूछा जाएगा. गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट. कर्नाटका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट. उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट. इवन महाराष्ट्र का अपना खुद का है. देन इसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन है, UNTOC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिसेज ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. फिर यहीं पर हमने मनी लॉन्ड्रिंग, आप सबको पता है क्या होता है. ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है. तो द प्रोसेस ऑफ राउंड ट्रिपिंग थ्रू हवाला, आवर ओन मनी, करप्ट मनी आर गोइंग टू सम फॉरेन अकाउंट टू द टैक्स हेवन टू विच इंडिया इज हैविंग द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. And then through the investment in IPL, other type of games, other type of activities, it is coming to India. This particular provision is known as round tripping and it is the major perspective behind the money laundering. तो मनी लॉन्ड्रिंग हमें नहीं पढ़ाना, हमें पढ़ाना है स्टेप्स क्या है.
सबसे बड़ा स्टेप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 में आया था, बिफोर इंडिपेंडेंस. It covered proceeds of only certain crimes such corruption, breach of trust and cheating, and not all the crimes under the Indian Penal Code. Then COFIPOSA, that is Smuggled and Foreign Exchange Manipulator, Forfeiture of Property Act, NDPS Act, and now PMLA, Prevention of Money Laundering Act 2002. ये ईयर जरूर याद रखना 2002. वो लोग बड़े ग्रीडी होते हैं, that you should know some factual information correctly. नंबर मिलते हैं अच्छे खासे. It forms the core of legal framework put in place by India to combat money laundering. तो ये पहला लीगल फ्रेमवर्क था इंडिया में टू कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग. द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एंड देयर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. PMLA Amendment Act 2012 add the concept of reporting entity which would include a banking company, financial institution, intermediary. PMLA Act 2002 levied a fine up to rupees 5 lakhs, but the Amendment Act has removed this upper limit. It has provided for provisional attachment and confiscation of property of any provision involved in such activities. Financial Intelligence Unit, IND, it is an independent body reporting directly to the Economic Intelligence Council headed by the Finance Minister. Enforcement Directorate, it is a law enforcement agency and economic intelligence agency responsible for enforcing economic law and fighting economic crime in India. One of the main function of ED is to investigate offences of money laundering under the provision of Prevention of Money Laundering Act 2002. It can take action like confiscation of property if the same is determined to the proceeds of crime derived from a scheduled offence under PMLA, and to prosecute the persons involved in the offence of money laundering. India is a full-fledged member of FATF, that is the Financial Action Task Force. International में आया था वियना कन्वेंशन सबसे पहले. 1990 में काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन. G10 बेसल कमेटी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन एंड FATF 24 मेंबर्स हैं. G7 एस्टैब्लिश किया था 1989 और 24 OECD कंट्रीज प्लस हांगकांग, सिंगापुर, GCC, यूरोपियन कमीशन के इंपॉर्टेंट लोग हैं. देन IMF भी करता है कहीं ना कहीं, एंड यूनाइटेड नेशन, दैट इज द ऑफेंस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. फिर हमारा पीस पैक्ट साइन हुआ उल्फा के साथ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप इन असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम. 19th सेंचुरी में बना था. इन्फ्लक्स ऑफ द माइग्रेंट जिनको पसंद नहीं आए, दे आर हाईली अगेंस्ट द बंगाली पीपल मेनली फ्रॉम बांग्लादेश. Origin of ULFA 1979, advocating for independent Assam through armed struggle against the Indian state. Over decade, ULFA recruited and trained member of Myanmar, China and Pakistan. 1990 गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन बजरंग. PT एग्जामिनेशन, PT में से जाता तो इंटरव्यू है आपका, तो ऑपरेशन बजरंग आ जाएगा, दैट इज ऑपरेशन बजरंग. Resulted in the capture of a large number of ULFA rebels. Assam was labeled as disturbed area, and then AFSPA is implementing in Assam. Then negotiation between ULFA, Indian government and Assam state government began in 2011. अब recently peace accord हुआ है ULFA के साथ to announce violence and disband their organization, joined the democratic process, surrender weapons and camps. Government to address ULFA concern regarding Assam identity culture. 1.5 lakh crore investment for Assam holistic development, and 2023 delimitation and citizenship amendment act. Clear? So these all are the part. तो 2 मिनट में रेस्ट ले लेता हूँ, फिर आगे पढ़ाता हूँ आपको. ठीक है, अच्छा लग रहा है? ठीक है, 1 घंटे में पूरा इंटरनेट सिक्योरिटी हो जाएगा आप लोगों का, है ना? अब कुछ और इशू और आपको मेन करा देते हैं, जैसे सेक्युलरिज्म. आर यू देयर एवरीवन? दैट Yes, sir. व्हाट इज सेक्युलरिज्म, व्हाट इज कम्युनलिज्म? तो इंडिया का पार्टीशन रिलीजियस लाइन पर ही हुआ था. द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन, व्हिच प्रोवाइडेड द ओवरऑल टर्म ऑफ कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन द पीपल ऑफ वन रिलीजन आर फीलिंग दैट दे आर सुपीरियर टू अनदर, or their communal practices or religious practices are superior and far better than other, or they are having the objective that only one religion prevail or their religion prevail, it is resulting into communalism. Communalism always comes with violence. Communalism always comes with hatred, and communalism resulted into the overall segregation of society, also known as polarization. Why communalism become very prominent in India? Number one, Indian government at the time of independence requested the Muslim to stay in India. This feeling hurted the sentiments of other people who hurted in Pakistan. Number two, political agenda, also known as vote bank politics. That minority people are not meant for development. They are mainly meant for
votes and the winning in the election, vote bank politics. Number 3, socio-economic indicator. The Census Commission as well as various reports highlighted that education level of minorities, particularly Muslims, both men and women, are on the lowest. Their participation in the white collar job and government jobs are minimum. They are mainly indulging in the petty jobs like carpenter, hairdressers, and this thing that is a fabrication works, clothing work, all this type of works is there. They are religious fundamentalist. They are not sending their children to the modern education institutions. Majority of them are sending to the madrasas, where the mindset is not that much open. All these things resulting into radical views as well as mind washing of the brain. Even on the other side, the majority regions, some of the fundamentalist groups are originated, which resulting into cow vigilantism, intolerance, communal riots, Palagar type of incidents, Haryana type of incidents, even the social media, editorials, fake news, fake facts, deep fake, artificial intelligence, all are technically playing the role of communalism in our country. In India, to control the communalism, legislation is there, rapid action forces are there, but somehow it can be controlled more from the side of the people. Control over hate speeches in the elections, election commission reforms is a requirement. Number 2, de-radicalization drive on the line of Telangana and Maharashtra government. De-radicalization drive, where police, teachers, and other type of institutions, by taking the help of persuasion, changing the attitude of the masses in a more liberal manner that we will respect every religion. Hindu people can read about Quran, Muhammad Sahib, and Muslim people or other religion people are reading about Bhagavad Gita, practicing the yoga and other type of things. This radicalization drive is one of the major solutions. Then CCTNS, crime, criminal and tracking system, and cyber emergency response team to control the overall social media, plus CDOT, one of the major telecommunication agency in our country, to control the overall inflow of information by international calls, can provide the substantial contribution control of communism in our country. सेक्युलरिज्म के आर्टिकल हम लोगों को पता है, आर्टिकल 25 to 28, 29, 30 इज रिगार्डिंग द कल्चर, और इसमें भी हमें पूरी ऑटोनॉमी उनको देना चाहिए. फिर पूछा जा सकता है राम मंदिर की वजह से कम्युनिज्म बढ़ रहा है क्या? नहीं, कम्युनिज्म नहीं बढ़ रहा है. हियर इट इज जस्ट अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. वी आर मेकिंग द टेम्पल without seculating. It is the political parties and their overall opinion which are saying Muslims or other minorities are under the threat. They are feeling isolated. Otherwise, it is not like this thing. अगर ऐसा होता, इन अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, 99% of the tourism is handled by Muslim traders, merchants. केदारनाथ में भी, तो ऐसे कैसे वो आइसोलेटेड फील कर सकते हैं? They are generating good amount of employment, opportunities, economic development like this. Got it? क्या मेरी बात समझ गए आप सब लोग? फिर कम्युनलिज्म के बाद सेपरेटिज्म आता है. सेपरेटिज्म का हिस्टोरिकल लाइंस हैं. एट द टाइम ऑफ ओवरऑल इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ने बोला था दैट यू शुड अडॉप्ट द ओवरऑल लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द अमलगमेशन. हिस्टोरिकल प्रोमिसेस करे गए लाइक इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, रानी गडिंगलिव, जदोनाथ, फीजो, जिसकी वजह से प्लेबिसाइड 100% ये लोग जीत गए, बट somehow गवर्नमेंट इज नॉट फॉर्मिंग द सेपरेट स्टेट एंड कन्वर्टेड द एरिया इनटू यूटी एंड लेटर इनटू द स्टेट. Even they are guiding by the protection of Article 371 A, B, C. But after that dissolution of 370, they are having the threat in the mind. In the near future, maybe government will also abolish the Article 371 and associated parts and compartment. Separatism resulted into insurgency. The other countries like Pakistan, China, Myanmar are supporting this insurgency group. Insurgency is nothing but waging the war against the government to fulfill their political administration in the form of separatist territories. इंडिया का रिस्पॉन्स टू कंट्रोल द सेपरेटिस्ट मूवमेंट 3 है. नंबर 1, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ एज वेल एज AFSPA, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी. Even on the developmental side, we are providing some areas, ILP, inner line permit, protection areas, even some tribal protection areas and 6 scheduled areas. These are some of the development initiative to control the separatist movement in our country. अब extremism और नक्सलिज्म क्या होता है? Extremism is a broad concept. Extremism means only one thing: breaking the law of the land. So any act which is against the law and order of this country is known as extremism. One of the form of the extremism is Naxalism, which is again having the historical base from the Assam and West Bengal Naxalbari area. The people who belong to CPIS, that is Communist Party of India, Maoist,
one never accepted the independence and they are still feeling it is just a change of the government, but still India is not a free country. It is a colonial country under the new government led by Indian government. Then their ideology is similar to the China, resulting into formation of corridor, that is Pashupati to Tirupati, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, eastern part of Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, all are affected by the extremism, and a new form of extremism is coming in the form of urban extremism or Naxalism, which is propounded by the group name as Bharat Tere Tukde Honge, Inshallah, Inshallah. That means the people who want that urban areas are the major areas where the professionals like professors, lecturers, teachers, students, and somehow social media can be promoted to promote the ideology of communism, guided by Chinese Maoism, which wants socialism but through violent means, equality, which is not possible in the real world, and their particular aim is abolition of the government. एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के इनिशियली गवर्नमेंट ने बहुत फैक्टर लगाए, फर्स्ट डेवलपमेंट देन आर्म्स, बट टुडे आर्म्स एंड डेवलपमेंट आर कंबाइंड फैक्टर्स. गवर्नमेंट ने एग्जांपल दिया that in the family if some child become rebellious we can't shoot it. In the same manner Naxalite people are the citizen of this country, we cannot deploy the army. If interview board will ask क्या हमें आर्मी को डिप्लॉय करना चाहिए, your answer will be absolutely no. हमें आर्मी को कभी भी डिप्लॉय करना नहीं चाहिए. In spite we can increase the confidence, the mistrust to trust and inclusion. इसलिए गवर्नमेंट ने 2005 के बाद अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी. वो स्ट्रेटजी क्या है ध्यान से समझना. Community radios in their local language, tribal culture and their protection through ashram school, porter cabin school. OP Chaudhary, the one of the Chhattisgarh DM, provided it. Now he is a politician, won the election in the recent Chhattisgarh election. He initiated the concept of porter cabin schools. Then the custodial crimes. Police can control the hard power approach, control the custodial rape, increase the confidence of the tribals. Then tribal welfare schemes like Van Bandhu Kalyan Yojana, District Mineral Foundation, Pradhan Mantri Khanish Kshetra Vikas Yojana, isko flourishing karna hai. Then regular festival celebration by the police and the tribal people. Then surrendering scheme. And if this is not working and still some of the violent group is there, then the particular rebellion like Black Panther in Jharkhand, Cobra battalions in Chhattisgarh and the Odisha and Greyhounds in Andhra Pradesh. But the overall forces should be in the last. Recently, one more intelligence organization by the name of NTRO, National Technical Research Organization, has been inculcated to control the particular problem regarding the Naxalism by providing the real-time survey and data to provide it to CRPF forces. CRPF is a major agency. Simultaneously, Shasastra Seema Bal, BSF, who are controlling the problem of Naxalism in our country. Bharat Mata ki jai. तो ये मेन टॉपिक हो गया जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. साइबर क्राइम से ज्यादा नहीं आएगा, बस याद रखना साइबर क्राइम में अगर पूछे तो बोलना सर हमारे पास 5 मेजर प्रॉब्लम है साइबर क्राइम को रोकने की. नंबर 1, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी पुअर. वी नीड 5 लाख ह्यूमन रिसोर्स, बट एक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स इज जस्ट 6,500 राइट नाउ इन इंडिया टू कंट्रोल द साइबर क्राइम. Cyber infrastructure has been expanding blindly. Majority of the illiterate rural people are using the mobile phones, smartphones with internet-enabled things. Play Store application which are fraud without any type of permissions. People are giving all the permission. Import of the semiconductor chips are coming with bugs, malwares which are harming it, and unemployment in India resulting into new methods of cyber crime. Jamtara is one of the area within Jharkhand which is famous for cyber related crimes. Control karna hai state specific policy like Cyberdome network of Kerala. NIC, National Informatics Center, and their servers should be expanded. CDOT can be engaging in the cyber security, and CRTIN will give more funding and power. And IPS officers should give the special training. In every police station there should be cyber branch, which is not possible except 2 things. Number 1, human resource. Number 2, funding. ये आप अपना एनालिसिस साइबर सिक्योरिटी के लिए देकर आएंगे. नाउ द रिमेनिंग टॉपिक्स. रिसेंटली हमने INS इम्फॉल को किया है, विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B. 75 स्कॉर्पियन सबमरीन का था. विशाखापट्टनम क्लास में आता है ये. INS सूरत के बाद नया था. फीचर क्या है? 163 लेंथ है इसकी, 17 मीटर ब्रेड्थ है, 7400 टन का शिप है, फ्यूल्ड पावर बाय गैस टर्बाइन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, न्यूक्लियर बायोलॉजी के केमिकल वारफेयर को झेल सकता है. And it is a part of Indo-Pacific Strategy and Sagar Initiative. Indigenous destroyers है, construction program under 3 Delhi class
P15 और P15 है कोलकाता क्लास। तो इसके अंदर दो प्रोजेक्ट है 15 एंड 15A, जिसमें विशाखापट्टनम, बर्मेगोआ, इंफॉल एंड सूरत, ये 4 तरह के शिप बनाए जाएंगे। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पूरा मैंने दे दिया यहाँ पर, जो आपको समझाया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मेन समाधान स्ट्रेटेजी है, S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, A फॉर अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, M फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D फॉर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, H फॉर हैसल फ्री ट्रेनिंग, A फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड फॉर नो एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, एंड देन स्मार्ट पुलिस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टैक्टिक्स। फिर इसके बाद पूरा आपका एक वे फॉरवर्ड दे रखा है, पीसैट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, ट्राइबल को एम्पावर किया जाए, डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाए, काउंटर मॉइस्ट प्रोपेगेंडा चलाया जाए, नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया जाए। नाउ यूएपीए का एनालिसिस, which is another news, it is the first enacted in 1967 to deal with secessionist movement. तो यूएपीए इंडिया में आया था to control the secession movement and anti-nation activities. It was amended several times, most recently in 2019 to include provision related to terrorist financing, cyber terrorism, individual designations. NIA to investigate and prosecute, इसी के अंदर हुई। यूएपीए में provide for the death penalty and life imprisonment as the highest punishment of terrorist activities. तो लाइफ imprisonment और डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, like the NDPS Act. It allow for the detention of suspects without charge or trial for up to 180 days. तो इसमें आपका preventive detention है 180 days का. It defines unlawful activities as any action that support or incite the secession or secession. And it defines terrorism as any act that cause or intend to cause death or injury to any person or damage or destruction to any property or threaten the national security. Favor क्या है national security से बढ़ेगी, which is very important for sovereignty of this country. स्टैन स्वामी ने बोला था, स्टिल इंडिया इज नॉट रेडी टू टैकल द टेररिज्म, दैट्स व्हाई वी नीड यूएपीए। फिर काउंटर टेररिज्म मेजर है भारत का सबसे बड़ा। प्रिवेंटिव डिटेंशन आ जाती है, जिससे हम टेररिज्म को रोक सकते हैं। ग्लोबल कमिटमेंट दिखता है इसके थ्रू। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या अच्छा नहीं है, वॉलेटिव टू द फंडामेंटल राइट्स, पर्टिकुलरली आर्टिकल 19 एंड अदर्स, लैक ऑफ सेफगार्डिंग मेजर्स। टेररिज्म किसी को बोला जा सकता है, इसके लिए केस आया था एनआईए वर्सेस जहरूर अहमद शाह वाताली केस। फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, बिकॉज पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड लो कन्विक्शन रेट है। फिर जुडिशरी ने केस के अंदर बोला, अरूप भोयान वर्सेस स्टेट ऑफ असम, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट mere membership of a banned organization will not incriminate a person. It can be done if a person resort to violence or incite people to violence or does not act intended create a disorder. Then PUCL, People Union, that is People Union of Civil Liberty versus Union of India and K नाजिब केस। बस इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। देन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भारत में क्या क्या है, बस एक फ्यूजन सेंटर याद रखना, कोस्ट गार्ड याद रखना, नेवी याद रखना, कोस्टल सर्विलेंस, रेडार सिस्टम एंड सागर इनिशिएटिव। क्लियर, दैट्स इट। तो ये आपका पूरा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। इसके अलावा आपको कोई भी अगर इशू लगता है यू विल आस्क मी। क्लियर, और इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, आईआर आपका मेन पार्ट हो गया। इसके अलावा आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, जस्ट टेल मी, आई विल टीच यू दैट पर्टिकुलर इशू। मुझे सिर्फ आप एसएमएस कर दीजिए कि सर ये टॉपिक पढ़ने हैं, आई विल टीच दैट्स ऑल दिस टॉपिक्स इन अ वेरी गुड मैनर, बट अपडेट मी बिफोर 24 आवर्स, ताकि आई विल मेक द शेड्यूल एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल डू इट। कल इंडिविजुअल सेशंस करेंगे, जो मैंने काम दिया था कर्नाटका से रिलेटेड, और उसमें पहला सेशन निखिल का होगा, क्योंकि निखिल का भी बचा हुआ है, तो फर्स्ट सेशन बिलोंग टू निखिल। और कल मैं टाइमिंग्स दे दूंगा किसका किस बजे एक सेशन रखा जाएगा, उसके हिसाब से वी विल प्रोसीड। क्लियर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। यस सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.